सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिवर्स कैश फीस एंड इट्स बेनिफिट्स. So first we'll introduce what is actually gas fees in our next slide. So and then we'll give a brief intro of reverse gas fees, a few of its benefits, and few of the pros and cons of reverse gas fees. And yeah, let's start. So first, let's see what a gas fee is actually. So gas fees are the transaction fees paid by the users required to process and validate transactions on a blockchain network. जैसे कि कोई अगर ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सेटअप में यूजर्स को एक फीस देने पड़ती है टू माइनर्स या फिर वैलिडेटर्स को टू हैव देयर ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड इन दैट ब्लॉकचेन नेटवर्क. ऐसे ही मतलब बिना कोई फीस दिए ऐसे वैलिडेट नहीं किया जाता है. सो ट्रेडिशनली ये इथेरियम नेटवर्क में अभी जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम नेटवर्क का ब्लॉकचेन नेटवर्क में किसी को अगर अपना इंक्लूड करना है, सो दे विल हैव टू इंक्लूड अ गैस फीस. सो नाउ टू implement to now reverse gas fees ये होता है कि it works in this exactly opposite way by reimbursing those users which have given this fees with some benefits or with some tokens. So for example, we'll see in the next slide. So it's a new concept that allows users to earn rewards for providing liquidity to a liquidity pool. आसान भाषा में इट वो यूजर्स को एक रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने का मौका देती है जब भी यूजर्स एक गैस फी पे करते हैं, ताकि अपना वो जो ट्रांजैक्शन फीस जो वो दे रहे हैं उससे लिए थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो सके. So the rewards that they are paid are in the form of tokens which can be sold or used in other transaction obviously. So yeah. So how does this reverse gas fees works? So users जब भी liquidity provide करती है to a pool, and pool in this case is a blockchain network, वो एक portion receive करते हैं on the transaction fees that are paid by them. So that portion is called as reverse gas fees. So instead of paying the whole gas fees, users can earn rewards by providing liquidity. The more the liquidity is provided, the more the rewards are earned by them. So typically ऐसे वर्क करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर नंबर वन साइकिल्स आर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटेशनल वर्क और प्रोसेसिंग पावर ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क. वो एग्जैक्टली ये मेजर करते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज आर कंज्यूम बाय दैट ट्रांजेक्शन विच द कस्टमर हैज प्रोवाइडेड. और हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक ऑपरेशन requires a certain number of cycles, right? So they require a certain number of cycles to complete, and that is actually being calculated on the network. Now gas fees जो calculate होते हैं are calculated as on based of the cycles. They are paid in cryptocurrency, for example in ether or ethereum, to compensate those miners or validators for their efforts in this processing and validating transaction. So the gas fees are calculated based on the amount of computational work, which is also known as cycles. The third part is reverse gas fees. Now, upon paying this gas fees, users are rewarded with a refund or a rebate of the gas fees that they paid for their transactions in the form of tokens or in like I just told. So instead of users bearing the full cost of gas fees, a portion or the entirety of the fees is returned to the users. आसान भाषा में लाइक यू कैन टेक इट एज अ कैशबैक. जब भी आप किसी यूपीआई या किसी चीज़ के थ्रू पे करते हैं, समटाइम्स कोई एप्लीकेशन में जैसे क्रेडिट जैसे जीपे आपको एक कैशबैक प्रोवाइड किया जाता है जो कभी कभी होती है. इट्स इन अ स्मॉल अमाउंट बट इट इज़ देयर. सो थोड़ा सा जिस्ट में रिवर्स कैश फीस वर्क्स लाइक दैट. Now a few benefits of why reverse cash fees are required. So number one, users obviously they save money on this transaction fees by earning rewards instead of paying the whole fees. दूसरी बात, users earn a massive income by providing liquidity to a pool. So अगर आप ज़्यादा liquidity provide करेंगे users को ज़्यादा RGF मिलेगा, in which in case
can be called as a passive income. Thirdly, reverse cash fees helps increase the liquidity on the network. अगर आपको मिल रहा है, आपको ज़्यादा कैशबैक मिल रहा है, of course you will be compelled to invest, or put more transactions, put more value to that particular chain or particular network. So इस केस में नेटवर्क का भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है. So that's one thing. A few problem of this RGF is, number one, the financial barrier. High gas fees can make it uneconomical for users to perform even simple transactions, right? So, for example, for this D apps, or this high transactions can demotivate the users from participating in the whole ecosystem. सो इनिशियल केस में तो फाइनेंशियल बैरियर ही मेन सबसे बड़ा हिंड्रेंस है कि जब गैस फीस ही हाई हो तो यूजर्स ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाते हैं टू परफॉर्म दो सिंपल ट्रांजेक्शन्स ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क. सो इस प्रॉब्लम को एक है जो रिवर्स गैस फीस से उतना सॉल्व अभी नहीं हो पा रहा है. यूजर एक्सपीरियंस सेकेंडली, यूजर्स काफ़ी often होता है कि especially in this blockchain network they receive some delays on transaction failures due to high transactions, high network, high traffic, which is caused by high gas fees. So ये negatively impact करता है user experience को, और कभी कभी this can lead to frustration and disengagement, so which indirectly harms the network, harms the blockchain network. So, how this reverse cache fees and ensure a seamless experience for end users, ये हम देखेंगे next slide में. So by providing a gas fees, RGF aim to provide us a similar experience for end users in like few of this listed ways. Number one is cost saving. जैसे मैंने कहा था, users save कर सकते हैं money को on this gas fees, which make it all more affordable for them to interact with the apps and perform transactions on this blockchain network. Secondly is enhanced accessibility. Lower या फिर refunded fees make it easiest for new users to join the ecosystem. नए users ज़्यादा attracted होंगे ये RGF का feature सुन के, और वो काफ़ी नई चीज़ों को try out करेंगे with different decentralized applications without worrying about excessive costs. And thirdly is improve efficiency. RGF can help reduce network congestion by incentivizing users to optimize their transactions, and they basically tell them that to optimize their whole transaction in the best possible way they can, and reduce the overall load on the network, so that they can receive the RGF in a fast way, in a more efficient way. They don't have to wait for the RGF. So that's plus point. This in turn can obviously lead to a faster transaction confirmations and a smooth user experience. और एक और चीज़ है कि एक पॉजिटिव इंसेंटिव प्रोवाइड होती है, जैसे RGF प्रोवाइड यूजर्स विद एन एडिशनल इंसेंटिव. जैसे पता चला टू यूज अ प्लेटफॉर्म लाइक डी ऐप, और बाई rewarding users with different gas fee refunds, developers और projects भी काफ़ी attract होते हैं, and they can retain more users for creating a positive ecosystem, because in the end ecosystem is what is the ultimate the goal, to create a high wall ecosystem for this ultimate blockchain experience. So it is worth noting that implementing of this reverse gas fees can vary depending on specific blockchain network and the app. So the exact mechanism and conditions for this RGF may differ, but overall the goal remains the same: to reduce the cost and enhance the user experience in a decentralized ecosystem. सो आप ज़्यादा RGF प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, यूजर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. यूजर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो ब्लॉकचेन नेटवर्क में आपका ट्रैफिक ज़्यादा पड़ेगा. ट्रैफिक ज़्यादा पड़ेगा तो एक इकोसिस्टम तैयार होगा. इकोसिस्टम तैयार होने से कम्युनिटी बिल्ड होगा. कम्युनिटी बिल्ड में कम्युनिटी डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज दे आर फेसिंग, दैट विल बी रिजॉल्व सून. एंड अल्टीमेटली गोल ये बनते हैं कि क्रिएट a non-failure type of a transaction ecosystem where everything just works seamlessly. So yeah, that's the end goal. Hope you had a better understanding of what is RGF and how they work and how they benefit you. Thank you. Bye bye.